अलकेश, गुड इवनिंग। कैसी है तबीयत आपकी अभी? क्या दवाई वगैरह लिया? हाँ, थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा लगा सुन के कि आप बहुत यू आर फीलिंग कॉन्वलेसेंट। आप रिकवरी हो रहे हो। वेरी गुड। So I think I gave in the group syllabus and one story, right? So you please read the story again. I want to take your reading skill. So read the story, and before you read the story, I will be reading the story, and just you listen to me how to read, and then you will be reading 2 times. After that, you will be reading 2 times, and then we shall go for the next work to do. Okay. So, how to read, just listen to it very carefully and you can get some ideas about that to read. So, trust is showing confidence, faith, and hope in someone or something. There are many ways to show trust. Helen trusted her friends. She didn't keep secrets from them. She shared her things with her friends. She knew they would do the right thing and not betray her trust. She tried hard to be the kind of friend that they could trust too. Trust works both ways, and Helen was trustworthy. Nick let his friends borrow his stuff all the time. He did not even remember who had what. Whenever he needed something back, he just asked all of his friends who had his game, who had his game or his book. They always gave it back because they liked how nicely he shared. He could always borrow his friends' games and books too. Nick trusted his friends. So, this is a reading skill. Here is being told about what is trust and what are the behavior Helen and Nick makes to make themselves that they are really a trustworthy persons. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जो स्टोरी ट्रस्ट मतलब विश्वास के ऊपर है। इसमें कहा गया है कि कैसे भरोसा भरोसा करने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो लोग क्या काम करते हैं कि उन पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो देयर आर टू पर्सन्स हियर। यहाँ पे हेलन और निक दोनों के बारे में बताया गया है। जो हेलन अपनी क्या करती है, वो अपनी सभी दोस्तों पर ट्रस्ट करती है और उसका जो है वो किसी को अपने दोस्तों पर को कुछ भी नहीं छुपाती। वो अपना सब कुछ अच्छा जो उसके साथ होता है, जो वो है, वो सब कुछ दोस्तों को बता देती है। और निक जो है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। जहाँ पे जिसका बुक लिया था, जिससे जो कुछ लेता है, उसको टाइम टू टाइम वो चीज़ वापस भी कर देता है ना? तो इसी के बारे में बताया गया है। तो ट्रस्ट मतलब विश्वास क्या होता है और विश्वास रखने वाले क्या-क्या काम करते हैं, क्या-क्या काम करने पर विश्वास मतलब विश्वासी आप पर भरोसा किया जा सकता है। एक भरोसेमंद इंसान कहा जा सकता है, यही है बात। So now you read one time, then you read again this one. So please start. You read it. But here are some words that's pronunciation is not correct. But I will write some words here.
And after that, making this pronunciation correct, again you will be reading 2 times this one. Okay. यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आपने जैसा करना था वैसा नहीं हुआ, तो मैं उनको मतलब यहाँ पे लिखूंगी, लिख के आपको एक बार पढ़ना है यहाँ पर। पढ़ने के बाद उस प्रोनाउंसिएशन को फिर से पढ़ने के दौरान आपको फिर से वही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के दौरान आपको ये पढ़ना है, ये स्टाइल। ठीक है? तो आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन इज SHARED, shared. आप लिखिए, just write down SHARED, shared. It is not shared, it is shared. Yes, shared. Okay. Number two is, yes, trustworthy. Trustworthy. Next, number two is trustworthy. Next one is trustworthy, not worthy. Okay. Next word I heard that you have hair. It is not hair, it is har. Her. Har. It is not hair, it is har. Okay. Hmm. Next one is written. Let me check one time more. Then next one, it's not betray, it is betray. Betray. Okay. It is not betray, it is betray. So number one is shared. Number two is trustworthy. It is not worthy. And equally, you have to say, you have not to wait. Trustworthy, not like that. You should say trustworthy. In a, yes, trustworthy like that. In one click, you have to pronounce, you have to make a sound with this word. Har, Her, har. And next one is betray. Okay. The reading you made now, it was better than earlier 2 times you read. And that's the thing. Whenever you read something, pronunciation is really different thing. And by reading reading daily, you can make better, you can improve your pronunciation. रोज जब आपको पढ़ने दिया जाएगा तो पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली आपका प्रोनाउंसिएशन में एक आइडिया आ जाएगा, तो वो पढ़ने भी में भी आपका सुधार भी होगा। ठीक है? That's the thing you can gain, no problem. So now I think I have given in the group some one syllabus. What are the things are there in spoken English, right? Hmm. Then you now please write all the words, all the things, and then after writing, once you read all the portions in the group, that means आपको जो दिया गया है उसको आप अभी 1 नंबर 2 नंबर करके 3 नंबर 4 नंबर करके लिखिए। लिखने के बाद 2 बार मुझे एक बार पढ़ के सुनाइए क्या क्या लिखा है। ग्रुप, हाँ, ग्रुप में मैंने जो दिया है सिलेबस आप लिखिए, और सिलेबस उसी पेज में लिखिएगा जहाँ पे आप वो पेज आप या तो आपके घर में कहीं हैंग कर दें, मतलब क्या करें, वॉल में अगर चिपका सकते हो तो वो करें, और नहीं तो उसी पेज में लिखे जिस पेज को आप बार बार देख सकोगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखना आप। ठीक है? That's the word. हाँ हाँ, ये हम्म ये सिलेबस नहीं, ये तो रीडिंग स्किल है। सिलेबस मैंने और एक दिया है ना, इस रीडिंग स्किल के ऊपर देखना, और एक चीज है ग्रुप में मैंने सेंड किया है, सिलेबस मतलब क्या क्या कराया जाएगा स्पोकन इंग्लिश में, वही है। नंबर वन नंबर टू देके है ना सिलेबस, हाँ, उसको आपको लिखना है। ठीक है? उसको आप अभी लिख सकते हो। कैन यू राइट नाउ?
Yeah, please write down. Then I can make you understand that what are the things, what are the patterns of things are there for making spoken English better. Okay? कैसे ही टाइम बिताया, ये आपको देखना है। हाँ, तो कभी-कभी देखिएगा कि बहुत ही मतलब मान लीजिए मैं रीडिंग ही करा रही हूँ और कुछ नहीं करा रही हूँ। तो रीडिंग में आपको देखना है कि आपने 2-3 वर्ड क्या अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन आज किया है। अगर आपने किया है तो मतलब हमारा सेशन मीनिंगफुल रहा। नहीं तो सिर्फ पढ़ते ही जाएँगे, 2-3 पैटर्न्स करते जाएँगे और कुछ फल नहीं आएगा तो कैसे होगा, है ना? तो टाइम को नहीं देखना है, क्वांटिटी को नहीं देखना है, क्वालिटी देखना है। हाँ? तो ये आप देखना 1 घंटा के कम भी हो, कोई बात नहीं, पर कम हो, पर किफ़ायती हो। एक्सटेम्पोर स्पीच, EXTEMPORE। If you want to learn English, you should be a listener first. So what are they saying? Just listen to it. No need to ask them any question. No need to go approach them. Just you listen to them, and daily, if you are listening daily, then you can get a better idea of words making. Then it will help you in communication. Okay. So in your job, when you listen that you when you notice that others are talking in English, just you listen to them very carefully, and by listening daily to them, you will be able to get the pronunciation. You'll be able to get the idea of how to talk, how to speak at least some of the words in English, some of the sentences in English, and gradually you will be getting better at. Okay. कैसा कैसा है कंजंक्शन करेंगे हम जब करेंगे तब देखेंगे कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन है दो सेंटेंस को एक एक सेंटेंस बनाने का काम कंजंक्शन कर लेता है। ठीक है। हाँ हाँ। एक्सटेम्पोर स्पीच में तुझ कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे उस पर आपको इंग्लिश में कुछ बोलना है। जैसे कागज, कलम, कॉपी, मोबाइल, सिनेमा, घर, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स दिए जाएँगे, उसमें आपको इंग्लिश में कुछ बोलना है। ये हो गया। 12 टाइम फ्रॉम्स मतलब ये है टेंसेस, प्रेज़ेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस मतलब फॉर्म एक एक प्रेज़ेंट के 4 फॉर्म होते हैं, तो पास्ट के भी 4 फॉर्म और फ्यूचर के भी 4 ही फॉर्म होते हैं। तो 3 से 4 अगर गुना किया तो क्या मिलेगा 12 टाइम फॉर्म्स यही है, ठीक है? और वोकैब्युलरी मतलब वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड्स होंगे, उनके मीनिंग होंगे और उनको हम वर्ड्स कम्युनिकेशन में ऐड करेंगे, वोकैब्युलरी, ठीक है? ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हम सिंपली लिख सकते हैं, पर ग्रामर स्ट्रक्चर अगर यूज़ करेंगे तो ये भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो ऐसे करके हम आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। तो फिलहाल 5 ही रहने देते हैं, 5 करने के बाद, सीखने के बाद, जानने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाएँगे, ठीक है? So that's the work we have done here. So